Hello and welcome to all of you. I am Zishan Heather and welcome to Current Affairs series. आज की इस करंट अफेयर सीरीज के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस यूक्रेन वॉर थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स दोनों किस तरह से मौजूद हैं विज़ यूक्रेनियन वॉर। The global economy is transitioning to a new multipolar world order. What does this multipolar world order means? It means a world that is dominated by many powers. There are different terms like unipolar, bipolar, and multipolar. Unipolar refers to a system in which world is dominated by a single power. In a bipolar, it is dominated by two powers, and in a multipolar is a kind of world that is dominated by multiple powers. Unipolar world की example after the end of Cold War, the world was dominated solely by United States of America, which refers to a unipolar world order. Bipolar world ऑर्डर की जो मिसाल है दैट इज कोल्ड वॉर के दौरान जो है वो वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू टू पोल्स बाइपोलर वर्ल्ड उसके अंदर दो पावर सेंटर थे वर्ल्ड के सो द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स जो वर्ल्ड की जो ग्लोबल इकोनॉमी है दैट इज ट्रांजिशनिंग टू अ न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर द मोस्ट सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर सिंस द सेकंड वर्ल्ड वॉर ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है एक बहुत बड़ी शिफ्ट है बैलेंस ऑफ पावर की द रशिया यूक्रेन वॉर हैज एक्सेलरेटेड द ट्रांजिशन दैट वाज ऑलरेडी अंडरवे ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की जो ट्रांजिशन है ये ऑलरेडी जो है वो मौजूद थी इसको रशिया यूक्रेन वॉर ने इसको इसकी स्पीड को इसके पेस को जो है वो एक्सेलरेट किया है The transition that was already underway with BRIC, which refers to Brazil, Russia, India, and China, BRIC countries, rising contribution to the global production and trade, outstripping the growth in the US and EU economies in the last decade. Outstrip means exceed. Here it refers that the growth of production and trade of these brick economies like Brazil, Russia or China, इनकी जो economies की जो growth है, that was exceeded from the US and European Union, जो European countries है, उनकी economies से ज़्यादा था. This metamorphosis offers opportunities. Metamorphosis means a complete change, means this complete change offers opportunities. ये जो ग्लोबल ट्रांजिशन है इसके अंदर पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज जो है वो मौजूद हैं फॉर इमर्जिंग मार्केट्स इंक्लूडिंग पाकिस्तान टू ओपन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ties with neighbors and other regional economies. इस चेंज के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि दूसरी जो स्टेट्स हैं वो दूसरी कंट्रीज के साथ अपनी ट्रेड बढ़ा सकती हैं इन्वेस्टमेंट के जो टाइज हैं अपने नेबर्स के साथ और अपने जो रीजनल इकोनॉमीज के साथ जो है वो इंक्रीज कर सकती हैं However, significant threats have emerged that limit our ability to make independent foreign economic and energy security policies. जिधर कंट्रीज को अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं उधर खास तौर पे पाकिस्तान को जो है वो अपॉर्चुनिटीज के साथ चैलेंजेस मौजूद हैं चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ मेकिंग इट्स इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमिक एंड एनर्जी सिक्योरिटी पॉलिसीज के जो है वो चैलेंजेस दरकिनार हैं The most prominent threat is the balance of payment crisis. जो पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस with Pakistan facing the risk of sovereign default on external debt repayment. The International Monetary Fund bailout package has helped stabilize the economy and avert the immediate risk of default.
Here the term avert means to stop, रोकना। आईएमएफ के बेल आउट प्रोग्राम ने पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको जो इमीडिएट रिस्क ऑफ जो है वो डिफॉल्ट है उससे बचाया है। Nevertheless, nevertheless, it seemingly comes at the cost, with Pakistan being unable to secure oil from Russia at concessional prices, which India, China, and Bangladesh have successfully done to shield their population from the price hike spiral. जिधर आईएमएफ के बेल आउट पैकेज ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो है वो डिफॉल्ट से बचाया है, दूसरी तरफ उसी आईएमएफ की वजह से पाकिस्तान जो है वो रशिया से तेल खरीदता नहीं। अगर पाकिस्तान रशिया से तेल खरीदता, इट विल कॉस्ट आईएमएफ इन टर्म्स कि आईएमएफ या यूनाइटेड स्टेट्स के साथ रिलेशन खराब होंगे और आईएमएफ जो है वो उसको बेल आउट पैकेज नहीं देता। पाकिस्तान आईएमएफ की वजह से रशिया से तेल नहीं ले सकता, ये पाकिस्तान को कॉस्ट पे करनी पड़ती है। ऑन द अदर साइड, द कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना और बांग्लादेश, ये तीनों के तीनों कंट्रीज जो है वो जो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजन करती हैं और उन क्योंकि वो आईएमएफ से कर्जा नहीं लेती, इस वजह से वो अपनी पॉलिसीज इंडिपेंडेंट करती हैं और वो रशिया से कम कॉस्ट पे जो है वो अपना तेल जो है वो खरीदती है। ऑयल प्राइसेस, अगर ऑयल जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो उसके लिए बहुत ही जरूरी है। विदाउट ऑयल यानी एनर्जी सेक्टर जो पाकिस्तान का है वो इम्पैक्ट होता है। अगर पाकिस्तान रशिया और ईरान से जो है वो ऑयल ले लेता है तो वो दैट विल कॉस्ट एट लो कॉस्ट होगी। तो उस वजह से पाकिस्तान अभी करंटली आईएमएफ से बेल आउट पैकेजेस लेता है, तो उस वजह से वो आईएमएफ कंडीशंस लगाता है और आईएमएफ को कंट्रोल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका करता है। और अगर पाकिस्तान रशिया या ईरान से तेल लेता है तो वो उसके रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से खराब होंगे और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आईएमएफ को जो है वो कंपेल करेगा कि पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज ना दे सके। The economic opportunities for the new multipolar world order are enormous for Pakistan. पाकिस्तान के लिए इस जो उभरता हुआ न्यू मल्टी पोलर वर्ल्ड ऑर्डर है उसके अंदर पाकिस्तान को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं। द चैलेंज हाउ एवर इज हाउ वी परस्यू दीज opportunities diplomatically and strategically in the line with a national interest, particularly given our dependence on international multilateral financial institutions predominantly under the influence of West. जिस तरह हम लोगों ने बात की कि पाकिस्तान के पास मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक आईएमएफ जो और वर्ल्ड बैंक है उसके ऊपर डिपेंडेंस की वजह से पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं बना सकता। वो रशिया से तेल नहीं खरीदता। ईरान जिसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं उससे जो है वो अपनी ट्रेड नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान को बहुत सारा नुकसान होता है। This will require forging stronger economic ties with emerging economies that offer Pakistan complementarily in terms of trade and markets. This will require forging stronger economic ties with emerging economies that will offer Pakistan complementarity in terms of trade and market opportunities for our goods and services while enhancing our cooperation and relationship with existing superpower. Here, the word forging means to create something strong or enduring or successful. तो पाकिस्तान को जो है वो स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक टाइज जो है वो रखने पड़ेंगे जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं। इमर्जिंग इकोनॉमीज से इट रेफर्स टू द इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक चाइना and Russia and other countries
लाइक इंडिया, उनके साथ भी जो है वो ट्रेड रिलेशनशिप जो है वो बनाने पड़ेंगे। The new emerging world order is again driven by the need for energy and food security, with more countries like China and India working to secure their energy supplies, even at the cost of antagonizing the Western power. ये जो इमर्जिंग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, इसकी इसके अंदर जो कंट्रीज हैं वो अपनी एनर्जी और फूड सिक्योरिटी की डिमांड्स को लेके जो है वो अपनी जो इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी है उसको ड्राइव कर रही हैं at the cost of antagonizing. Antagonizing means to endanger. यानी चाइना और इंडिया जो है वो अपने ट्रेड रिलेशनशिप विद रशिया जो है वो वर्किंग रिलेशन रख रहे हैं, उससे ट्रेड कर रहे हैं एट द कॉस्ट जो कि वेस्टर्न पावर उससे नाखुश है। ऑन द कॉन्ट्ररी साइड जो है वो जिस तरह इंडिया और चाइना रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं या ईरान के साथ, वो पाकिस्तान जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। How India is making trade relationship with Russia, the payment infrastructure and the routes that Europe and India are using to work with Russia will become a reality and more acceptable with time at the back of desperate energy necessities. करंटली इंडिया और जो यूरोप है वो अपने जो ट्रेड रिलेशनशिप है रशिया के साथ जो है वो कर रहे हैं अपनी एनर्जी डिमांड्स को पूरा करने के लिए। ओवरऑल द पोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड इज being settled on economic and energy grounds stronger than even before. We in Pakistan cannot remain aloof from this new emerging global world order. इस ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान जो है वो सेट असाइड नहीं हो सकता। We must reevaluate our external affairs and consider repositioning ourselves politically, which will directly impact our economic policies going forward. Given how quickly the global winds of change are blowing, we will need to act swiftly on the foreign policy front or risking falling behind and thereby jeopardizing our shared vision of prosperous, independent, and secure Pakistan. सो पाकिस्तान को इस इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर अपनी जो एक्सटर्नल पॉलिसी है उसको री इवेल्युएट करना पड़ेगा। Indeed, foreign policy decisions are intertwined with economic policies. फॉरेन पॉलिसी के जो डिसीशंस है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज के साथ ही इंटरट्वाइंड है, वो मिक्स्ड है, वो उनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। Requiring a strong coordination and collaboration between the Ministry of Finance and the Foreign Office to advance our common goals. So, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक पॉलिसी इंटरट्वाइन है, ये मिले हुए हैं, इसी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फॉरेन ऑफिस को साथ साथ जो है वो काम करना पड़ेगा। The ruling establishment will need to accept this reality and deploy all hands on deck to get a balance of payment in order and place Pakistan on new path of inclusive and sustainable growth. Let's look what this evolving environment poses an opportunity for Pakistan. The biggest one is to get support on meeting an energy and food security need on the infrastructure front and inventory flow while fetching better trading terms for gas and wheat. So इस चेंजिंग जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है
इसके अंदर पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज मौजूद होंगी। वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज होंगी? जिस तरह वर्ल्ड मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ता जाएगा, ग्लोबल पावर्स जो है वो पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मुख्तलिफ पावर सेंटर्स होंगे, जिस तरह रशिया भी पावरफुल बनेगा, चाइना भी पावरफुल हो जाएगा। तो उस वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर पाकिस्तान अपनी जो एनर्जी और फूड की जो डिमांड्स है वो उसको पूरा कर सकता है। ना सिर्फ कर सकता है, उसके अंदर उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है ट्रेड की वो भी बेहतर हो सकती है। There may be a possibility to fix and develop energy infrastructure with Russia if acceptance of their role in trade becomes more appreciable in Europe and the rest of world. पाकिस्तान तभी अपनी जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है रशिया के साथ अफोर्ड कर सकता है अगर यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए जो है वो इस चीज से नाखुश ना हो तो। The Russia-Ukraine crisis has exposed new vulnerabilities on the climate change front, with the Western economies showing the limits of their support to green and climate smart solution. रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने जो क्लाइमेट चेंज जो कि एक ग्लोबल चैलेंज है उसके ऊपर कम फोकस कम है, उसके ऊपर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो कम कर रही हैं अपनी जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक राइवलरीज की वजह से, यानी क्लाइमेट चेंज भी कंप्रोमाइज पे आ रहा है। Many emerging and advanced economies will look to have a more diversified energy mix moving forward that includes gas, nuclear, and renewable energy. जितनी भी इमर्जिंग जो कि इकोनॉमीज इमर्ज कर रही है या एडवांस इकोनॉमीज हैं, दे हैव डाइवर्सिफाइड एनर्जी मिक्स। उन वो एक जो है वो एक एनर्जी के सोर्स पे डिपेंड नहीं करती। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो मोस्टली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पे रिलाई करता है, यानी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, दीज आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ऑन द कॉन्ट्ररी जो इमर्जिंग और एडवांस इकोनॉमीज हैं वो डाइवर्सिफाइड हैं। वो किस तरह डाइवर्सिफाइड हैं? दे डिपेंड अपॉन न्यूक्लियर एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। Funding, particularly for large energy projects, will be accessible through both bilateral and multilateral partners. Nuclear energy, in particular, offers great promise as an alternate low carbon fuel for power generation that Pakistan should explore. पाकिस्तान जो है वो एनर्जी मिक्स के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भी काम कर सकता है, अपनी जो एनर्जी डिमांड्स हैं उनको जो है वो परस्यू करने के लिए। The opportunity to get or white elephants like Pakistan Steel Mill fixed along with other state-owned enterprises through collaboration with Russia and China cannot be undermined. अब इधर जो फ्रेज है white elephant, white elephant का जो term है that refers to a position that is useless. अब पाकिस्तान के इधर इसका contextual meaning ये है कि पाकिस्तान की जो state owned enterprises है like steel mill, PIA, railways है, these are white elephant means useless. वो पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ बन चुकी है, इनके ऊपर बहुत सारा जो है वो कर्जा आ गया है, they are going नेगेटिव। तो इसी वजह से रशिया और चाइना के साथ कोऑपरेशन के साथ पाकिस्तान जो है वो दीज ये जो स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस है उनको जो है वो बेहतर बना सकता है। There will be surely be a more interest in our privatization assets from this new cash-rich region surface. No country can progress without a working relationship with its neighbors. Unfortunately, Pakistan has been a victim, having entrenched relationship with its bordering countries. But the shifting regional geopolitical dynamics have important implications. दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा कंट्री
जो है वो तरक्की नहीं कर सकता अगर उसके ताल्लुकात अपने नेबर्स के साथ अच्छे नहीं होंगे। इवन अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी की भी जो मिसाल लें तो उसके अपने नेबर्स के साथ रिलेशन, उसके डिस्प्यूट्स मौजूद हैं। उसके मैक्सिको के साथ कुछ डिस्प्यूट्स मौजूद हैं। कनाडा के साथ भी डिस्प्यूट हैं। डिस्पाइट दीज एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट्स, यूनाइटेड स्टेट्स या कोई भी कंट्री हो जो डेवलप करना चाहती है, वो नेबर्स के साथ उसके ताल्लुकात जितने अच्छे होंगे वो उसको उतना फायदा होगा। विदाउट गुड रिलेशनशिप विथ नेबर्स कोई भी स्टेट जो है वो डेवलप नहीं कर सकती। इवन चाइना के जो है वो डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं इंडिया के साथ भी, लेकिन डिस्पाइट एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना, दे हैव वर्किंग रिलेशनशिप। Russia already has a strong ties with India. This may benefit us in one way or other if Russia can use it in influence to reduce India-Pakistan tensions in the interest of regional stability. रशिया के जो ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं वो अच्छे ताल्लुकात हैं, वो इंडिया को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। उस इन्फ्लुएंस का फायदा ये हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो, जो टेंशन रिलेशन है वो वर्किंग रिलेशनशिप की तरफ से आ सकते हैं। China and India compete for regional supremacy and influence, but maintain a working relationship for their mutual economic interest. China can therefore also play an important role in diffusing tensions between New Delhi and Islamabad. जिस तरह हम लोगों ने पहले भी बात की कि कोई भी कंट्री अपने जब तक अपने नेबर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं बना सकता कि वो तरक्की की राह पे गामजन नहीं हो सकता। चाइना और इंडिया भी नेबर्स हैं और उनके दरमियान आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स मौजूद हैं टेरिटोरियल लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे। डिस्पाइट दीज डिस्प्यूट उनके रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर ये है कि रशिया और चाइना जिसके ताल्लुकात इंडिया के साथ रशिया के बहुत अच्छे हैं, वो इस इंडिया पाकिस्तान टेंशन को रिड्यूस कर सकता है। चाइना भी अपना रोल प्ले कर सकता है। An interesting element is the trade relationship between Afghanistan and Russia, with the West not willing to extend an olive branch to Afghanistan. Here, the term extend an olive branch means to reduce confrontation. There is an opportunity for Russia and China to become a bigger regional actors. A stable Afghanistan would benefit Pakistan greatly. इस मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर रशिया एक स्टेबल अफगानिस्तान जो है वो बना सकता है, रशिया और चाइना। और इस स्टेबल अफगानिस्तान के अंदर जो है वो पाकिस्तान बहुत ही बेनिफिट होगा। हाउ पाकिस्तान विल गेट बेनिफिट फ्रॉम अफगानिस्तान? क्योंकि एक अनस्टेबल अफगानिस्तान के अंदर इंसर्जेंसीज हैं, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटीज हैं। उस अनस्टेबिलिटी की वजह से पाकिस्तान के अंदर रेफ्यूजीज आते हैं, टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म के जो इश्यूज हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से एक स्टेबल अफगानिस्तान की वजह से पाकिस्तान के ऊपर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। If the US potentially water down sanctions and opens trade with Iran in pursuit of nuclear deal, it will positively impact countries like Pakistan. ऑन अदर साइड पाकिस्तान को तब बेनिफिट हो सकता है जब ईरान के जो न्यूक्लियर सैंक्शंस हैं वो खत्म हो जाए। न्यूक्लियर सैंक्शंस, ईरान के ऊपर सैंक्शंस मौजूद हैं। अगर किसी भी कंट्री के ऊपर सैंक्शंस मौजूद हों तो यानी उससे ट्रेड नहीं की जा सकती। पाकिस्तान मोस्टली डिपेंडेंट है आईएमएफ पे। आईएमएफ को यूएस कंट्रोल कर सकता है और अगर पाकिस्तान ईरान के साथ ट्रेड करता है तो यानी इट्स रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स विल बी नॉट मूव इन पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। तो उस वजह से पाकिस्तान के नॉट अफोर्ड ट्रेड विद ईरान इन टर्म्स ऑफ सैंक्शंस ऑन ईरान। In the light of these changing global realities, Pakistan must respond itself with a long-term review of where we want the country to go. We must leverage our geostrategic location and rich
endowment of natural resources, and human capital to embark on the new path of sustained economic growth using the full extent of foreign policy and economic tool at our disposal. Proactive diplomatic Proactive diplomatic efforts will be required to attract foreign investment and promote our goods and services in big and small markets. So पाकिस्तान को एक proactive diplomatic efforts required होंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए और अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए इन स्मॉल एंड बिग मार्केट्स एट द सेम टाइम our economic policy maker will need to prioritize export led growth and a healthy external account balance that reduce our dependency on foreign debt. पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर हैं उनको ये भी फोकस करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट लेड जो है वो ग्रोथ हो। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम है। जब किसी भी कंट्री की एक्सपोर्ट्स, अगर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगी तो पाकिस्तान के अंदर ज्यादा से ज्यादा डॉलर आएगा। जब डॉलर आएगा तो पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल बैलेंस अकाउंट है वो भी जो है वो इम्प्रूव होगा। तो इसी वजह से पॉलिसी जो मेकर्स हैं उनको एक्सपोर्ट लेड जो ग्रोथ है उस पे फोकस करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।